Welcome to the 14th batch of the National Education Policy 2020 Professional Development Program for University and College Teachers. Today is the first day of the Swayam Prabha live conferencing of your batch. I am Dr. Gloria Kuzur, one of the faculty members of STRIDE, and today we have with us Professor Santosh Panda, Senior Faculty of Distance Education and Director of STRIDE, IGNOU. Sir is also the National Coordinator of the NEP-2020 program. Sir, we welcome you to today's session on the topic, what institutions need to do to implement NEP 2020. So within a few seconds, we will move to Sir's session. So friends, welcome to this Swayam Prabha live conferencing, which you might be seeing at the Swayam Prabha Live channel 20, or maybe you are looking at this program through YouTube. So whatever the case may be, we will look forward to your questions and respond to that. I will largely present in Hindi, which will benefit you, but also use English from time to time. आप सबका स्वागत है। इस वक्त ये हमारा 13th बैच है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, 6 दिन का प्रोग्राम चलेगा। आप सबका स्वागत है। सबसे ज़्यादा इस बैच में ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि NEP के बारे में बहुत चर्चा हो गया। आप वीडियोस हमारे तमाम वीडियोस उसको देखे होंगे। इस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स भी है, उसको लेते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए इस वक्त कि हम NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करें। तो उसको जाने से पहले लेट मी फर्स्ट डिस्कस विथ यू कि सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स जो NEP ने रिकमेंड किया हमारे लिए। एक्सेस, इक्विटी, इंक्लूसिविटी, क्वालिटी मेजर मुद्दा है, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की चर्चा है। अप टू 50% by 2035 the gross enrollment ratio should increase up to 50%। अभी 27-28% के बीच में है, जो 50% बढ़ना चाहिए, और उसमें डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। और मेजर मुद्दा है कि इंडियन वैल्यू, कल्चर एंड ट्रेडिशन, उसके बेसिस पर हम लोगों का शिक्षा नीति जो बनी है और शिक्षा प्रणाली प्रोसेस उसमें चलना चाहिए। टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट उसमें होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हर देश, लगभग बड़े देश और डेवलप्ड कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, वो सब अपनी धरोहर के हिसाब से, अपनी कल्चर, लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ना पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अपनी धरोहर को बिलोंग करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज और जो राजभाषा नेशनल लैंग्वेज हिंदी, उसकी ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों का टीचिंग लर्निंग ज़्यादा थियोरेटिकल हुआ करता था। नेशनल पॉलिसी में फॉर्मुलेशन ये है कि हम ऑलमोस्ट 50-50 फॉर्मुलेशन में चलेंगे। 50% थ्योरी एंड 50% practicum with students' activities, engagement, individual collaborative work, as well as some of the important developments in pedagogy like portfolio-based learning or scenario-based learning or case-based learning or प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग, इसकी चर्चा हुई है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल का चर्चा हुई है, और उसमें इंटर्नशिप कंपलसरी हो रहा है। लगभग 50-50 फॉर्मुलेशन, 50% will be the discipline core and 50% from multidisciplinary skill courses, environment, value, ethics or Indian art and culture, and skill-based courses, ability enhancements courses, value added courses। तो इसमें ज़्यादा emphasis दिया गया है। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक हो, उसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, और हम इंस्टीट्यूशंस इसको किस तरह करेंगे। आउटकम बेस्ड लर्निंग यूजीसी में बहुत पहले से चला आ रहा है, तो आउटकम बेस्ड लर्निंग होगा जिसके बेसिस पर क्रेडिट तय होगा
और क्रेडिट एक्यूमुलेशन, क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की प्रावधान है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन, उसकी भी चर्चा है। एक्रेडिटेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, क्योंकि हमारे पास नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2023 मई 2023 में आ गया है, जो देश का सबसे प्रधान और एक ही क्रेडिट फ्रेमवर्क सभी तरह प्रोग्राम्स के लिए रहेगा देश में, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, जनरल एजुकेशन हो, एंड तमाम जितनी स्कूल एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन तक, रिसर्च तक, वो सब रहेगा। स्किलिंग एम्प्लॉयबिलिटी, सोशल एंड लाइफ स्किल्स, एम्प्लॉयबल स्किल्स, हैप्पीनेस स्किल्स, ये उसके मुद्दा है जो इसमें शामिल होगा। टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग, टीचिंग, स्टूडेंट सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फॉर इंक्लूसिविटी एंड डिसेबिलिटी एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इनकी चर्चा हुई है। इंटरनेशनलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा, हमारे देश से बाहर, बाहर से हमारे देश, क्रेडिट ट्रांसफ़र की पूरी प्रावधान है और वो लागू हो चुका है। क्वालिटी रिसर्च एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात है, उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और हमारा जो पूरा शिक्षा जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ चला भी गया है और ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जाएगा। फेस टू फेस, डिस्टेंस, ऑनलाइन, फ्लिप्ड, इसके हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो क्या हम लोग कर सकते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन? पहले बात, 5 साल का इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान सभी संस्था को डेवलप करना पड़ेगा और इसमें यूजीसी ने 15 पॉइंट आपके सामने रखा है। विजन, मिशन, इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल, SWOT या SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, तो उसकी नीड्स असेसमेंट हो हर तरह की चीज़ों के लिए। करिकुलम, टीचिंग लर्निंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लर्नर सपोर्ट, टेक्नोलॉजी यूज, असेसमेंट, सभी का नीड असेसमेंट होना ज़रूरी है। रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, वो भी इंस्टीट्यूशनल प्लान में रहेगा। फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल और ग्लोबल गोल्स हमारा क्या रहेंगे, उसके भी वो प्लान का हिस्सा होगा। पेडागॉगिक अप्रोच किस तरह का रहेगा अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, पेडागॉगिक अप्रोच शुड बी डिफरेंट, बट ये सारे आपकी पब्लिक डोमेन वेबसाइट में रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आपकी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए। डिफरेंट पॉलिसीज़ इंस्टीट्यूशंस बनाएं, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिटी सर्विस, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें रिसोर्सेज मोबिलाइज किया जा सकता है, उसके भी प्रावधान रहे। स्पेशल नीड्स एजुकेशन, उसकी पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, जो डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारी कास्ट, कल्चर, तमाम चीज़ों, डिसएडवांटेज जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, तो उसके तहत ये भी पॉलिसी संस्था के रहना चाहिए। फैकल्टी, टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके बारे में चर्चा हो। स्टूडेंट बॉडी इंक्लूडिंग alumni, strategic program and goals, development objectives, institutional development, individual student development, faculty development, staff development, community development, national development and global development, globalization, उसके तहत संस्था क्या करेगा, उसके भी चर्चा होनी चाहिए। करिकुलम एक्सलेंस, कुछ एरियाज़ में पॉकेट्स ऑफ एक्सलेंस, बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको भी लेके हम चलें। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टूडेंट फीस एंड एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, if you can provide the costing part of it, the institutional and private cost and the social cost and cost effectiveness, cost efficiency, इसके भी चर्चा हो। कहाँ से फंड मोबिलाइजेशन होगा, फीस किस तरह का होना चाहिए और संस्था का फिनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह का होगा। नीचे आप देखेंगे मैं मेंशन किया हुआ कि NEP सेल्फ होना ज़रूरी है और एक IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की ज़रूरत है। HRDC है, TLCs हैं बहुत सारे संस्था में, वो इसमें जो योगदान कर सकते हैं। और आगे मैं बात करूँगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर इंस्टेंस कुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, जिसकी चर्चा हुई है उसकी मैं बात करूँगा। और ज़रूरी हो गया है कि आप एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट को भी इस्टेब्लिश करें, जो तमाम टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजी इसका वो फॉर्मुलेशन करें, उसके इस्तेमाल करें और उसको टेस्ट करें, पायलटिंग करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको इवालुएट करें। तो ये 15 पॉइंट पर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान होना ज़रूरी है। दूसरी बात, यूजीसी का डॉक्यूमेंट आप लोग पढ़िएगा, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी, दिस आर गाइडलाइंस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम्स, उसकी चर्चा हुई है। 3 तरह का संस्था देश में रहेंगे, सो फॉर हायर एजुकेशन इज कंसर्न एंड फर्दर एजुकेशन इज कंसर्न।
मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी जो थोड़ी बहुत पढ़ाएंगे, ज़्यादा रिसर्च करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ जो टीचिंग ज़्यादा करेंगे और रिसर्च थ्रू स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स एंड फैकल्टी प्रोजेक्ट्स उसमें भी रिसर्च हो। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोनोमस कॉलेजेस जो सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो ऑटोनोमस कॉलेजेस में, डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। Affiliated colleges will become either cluster colleges or university colleges or autonomous colleges. Common departments रहने की ज़रूरत है क्योंकि जो सिंगल डिसिप्लिन डिपार्टमेंट या सिंगल डिसिप्लिन संस्था है वो मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। NEP उसकी चर्चा किया है, 13,000 प्लस सिंगल स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। जो डिपार्टमेंट्स इसमें मदद कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसॉफी, इंडोलॉजी, आर्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्योर एंड अप्लाई साइंसेस, इकोनॉमिक्स, ट्रांसलेशन, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सब इसमें शामिल है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिक्र करूँगा क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम्स UGC के, उसको आप लोग पढ़िएगा। उसमें चर्चा एजुकेशन डिपार्टमेंट की हुई है दैट एजुकेशन डिपार्टमेंट विल कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट ऑल 48,000 कॉलेजेस। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी देश में हैं, बहुत सारे स्टेट्स में, कुछ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में भी है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। एजुकेशन डिपार्टमेंट का दो फंक्शन रहेगा। एक, एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद ही मल्टी डिसिप्लिनरी है तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। और दूसरा जो विजुअलाइज हुआ है कि NEP का जो पेडागॉजी, टीचिंग, लर्निंग, टेक्नोलॉजी, असेसमेंट, ये तमाम चीज़ों को एजुकेशन डिपार्टमेंट NEP इम्प्लीमेंटेशन विद इन द इंस्टीट्यूशन उसमें मदद करेगा। तो इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का विजुअलाइजेशन हुआ है। बहुत सारे संस्था एजुकेशन डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मल्टी डिपार्टमेंट्स एंड मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम्स होगा। प्रोग्राम इटसेल्फ मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा, उसके भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस, डोमेन स्पेसिफिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएंगे। तीसरा मुद्दा जो हम लोगों को कंसिडर करना है, इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये देश का नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया। देश में एक ही क्रेडिट फ्रेमवर्क रहेगा। जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मई 2023 में फाइनलाइज हुआ उसकी मैं चर्चा करूंगा, जिसमें जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन को बराबर इक्विवेलेंसी दिया गया है और सर्टन मेजरेबल क्राइटेरिया जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क पहले हुआ करता था स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए उसको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में शामिल किया, जिसके बेसिस पर नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क डेवलप हुआ था। 10 लेवल का हुआ, आज की तारीख में 8 लेवल का हो गया। उसको चर्चा करूंगा, उसमें हम लोगों को शामिल होना है। These credits will be expressed in terms of student learning outcomes and all learning will be expressed in terms of credits. आगे हर चीज़ टीचिंग लर्निंग क्रेडिट में डिफाइन होगा, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। और क्रेडिट का मतलब हुआ द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम प्रोग्राम ऑफ स्टडी कोर्सेज में तय हुआ है, वो लर्निंग आउटकम को डिफरेंट लेवल में हम उसको अचीव करेंगे और अचीवमेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा। जो जिस स्टैंडर्ड पर हम उसको अचीव करेंगे दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू क्रेडिट्स। उसकी प्रायर प्रॉपर असेसमेंट होगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का हम लोग चर्चा करेंगे। जो बहुत सारे स्टेट्स इसमें आगे बढ़ गए हैं उसके भी मैं उदाहरण आपके सामने रखूँगा। और वैलिडेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग, होम बेस्ड लर्निंग, उसकी भी चर्चा हुई है, उसको भी। एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस है, उसको बराबर दर्जा दिया गया है। डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग बराबर है फेस टू फेस लर्निंग के साथ। इनफैक्ट फ्यूचर में द एंटायर लर्निंग विल बिकम ब्लेंडेड लर्निंग, उसकी चर्चा करेंगे। और लर्निंग 3 तरह का होगा, या कोर्सेस उस तरह का लर्निंग आउटकम को 3 ढंग से एक्सप्रेस करेंगे। एकेडमिक लर्निंग जो आज तक चल रहा था, स्किल बेस्ड लर्निंग, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर स्टूडेंट्स किसी एक्टिविटी में, प्रोजेक्ट में, पोर्टफोलियो में इन्वॉल्व हैं या अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में इन्वॉल्व हैं, वो भी बराबर रहेगा। और ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, कोई जॉब कर रहा है या कर रही है, उसको फिर कोई प्रोग्राम ऑफ स्टडी में आगे पढ़ना है, तो वो भी अगर एक्सपीरियंस को एसेस करते हुए कुछ क्रेडिट उसको बनता है तो क्रेडिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा उसको। और जो रेस्ट ऑफ द क्रेडिट करना होगा, सारे क्रेडिट को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सो लर्निंग इज टू बी एसेस्ड बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स।
at different levels of study, first year, second year, third year, assessment of learning होगा and allocation of credits होगा। ये क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंदर है और हमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को अपने इंस्टीट्यूशन में बराबर लागू कर देना चाहिए। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आपके सामने है, स्कूल एजुकेशन से लेके पीएचडी तक 8 लेवल का है। 4 लेवल स्कूल एजुकेशन में चला जाता है और 4.5 से 6 लेवल तक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, 6 से लेके 7 तक पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड पीएचडी 8 लेवल 8 का है। एकेडमिक, स्किलिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग तीनों इसमें शामिल होंगे। कैसे होंगे, कैसे बराबर होगा? अप टू ग्रेड 5 800 से 1000 घंटे का पढ़ाना होगा। ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स 1200 आवर्स ए ईयर, ये कांस्टेंट हो गया। आप 12 से ज़्यादा कर सकते हैं, 1200 आवर्स से कम नहीं कर सकते। एक साल में 40 क्रेडिट होगा। सर्टिफिकेट विल बी 1 ईयर, डिप्लोमा विल बी 2 ईयर्स, अंडर ग्रेजुएट विल बी 3 ईयर्स एज वेल एज 4 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएट विल बी 1 ईयर एज वेल एज 2 ईयर्स एंड पीएचडी विल बी 4 to 6 ईयर्स। ये उसकी प्रावधान है। सो देयरफॉर 40 क्रेडिट्स अ ईयर, 1 क्रेडिट इज 30 आवर्स। उसके भी थोड़ी मैं चर्चा करूंगा आगे पावर पॉइंट में। 1 credit is 30 hours, 40 credits, that simply means 1200 hours of teaching learning in a year. ये भी पॉसिबल हो सकता है कि डुअल डिग्री का प्रावधान है। साइमल्टेनियसली स्टूडेंट कैन टेक 2 degrees एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके लिए आपकी इंस्टीट्यूशन इसके लिए तैयार होना चाहिए। सो मोर देन 1200 hours one can take, in fact 2400 hours, 80 credits one can take in a year if one is admitted to 2 different programs. As I said earlier, the last point that you see, that 1 hour of theory will be equivalent to 2 hours of practicum, and which will be equivalent to 3 hours of experiential learning, either project based learning, portfolio based learning, या on the job training, जिसको आप recognition of prior learning करके credit transfer करेंगे। I repeat friends, आप जब curriculum design करेंगे तो उसमें 1 hour of theory will be equivalent to 2 hours of practicum, which will be equivalent to 3 hours of experiential learning. These hours will be converted into credits. 1 credit is 30 hours. Therefore, आपके कोई credit में पूरा theory 30 घंटे का हो, किसी में 10 घंटे का theory हो और 20 घंटे का practical हो, या आपकी एक credit में 3 घंटे का experiential learning हो, जो 40 से 10 credits में अगर 3 घंटे का आपके 30 hours of experiential learning. In fact, that will be 90 hours of experiential learning because 3 times more. So 1 of theory equivalent to 2 of practical equivalent to 3 hours of experiential learning. उसी ढंग से आपको क्रेडिट डिफाइन करना पड़ेगा, आपकी कोर्सेस ऑफ स्टडी और करिकुलम को डिज़ाइन करना पड़ेगा। फाइनली टू कंक्लूड दिस पॉइंट, जो आप देख रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन फर्स्ट ईयर से लेके पीएचडी तक आपकी क्रेडिट लेवल्स बदल जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर 4.5, जिसको लेके वो सर्टिफिकेट लेके जा सकता है, फिर वापस आ सकता है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर इज़ 5, थर्ड ईयर इज़ 5.5, फोर्थ ईयर इज़ 6, फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स इज 6.5, एंड एमटेक और एमएससी इंजीनियरिंग लेवल 7 एंड पीएचडीज लेवल 8। आप देखेंगे हर साल में 40 क्रेडिट्स ए ईयर कॉन्स्टेंट, बट आपके क्रेडिट पॉइंट बदल जाएंगे बिकॉज क्रेडिट्स विल बी एक्सप्रेस, स्टूडेंट लर्निंग विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स। पहला साल में आप देखेंगे लेवल 4.5 है, क्रेडिट 40 है, क्रेडिट पॉइंट 180। सेकेंड ईयर में लेवल 5 है, क्रेडिट 40 है एंड क्रेडिट पॉइंट बढ़ जाता है 200 को। पीएचडी में आप देखेंगे लेवल 8 है पर ईयर, पर क्रेडिट इज 40 क्रेडिट्स पर ईयर एंड 320 क्रेडिट पॉइंट्स हो जाता है। सो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे। आप नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2023 को जरूर पढ़िएगा, उसमें डिटेल डिस्कशन है। उसमें तीसरी मुद्दा ये है कि डुअल डिग्री, जॉइंट डिग्री और हायर एजुकेशन क्लस्टर हम लोगों को इंस्टीट्यूशन में सोचना पड़ेगा। हम किसी सेम शहर में दूसरे कॉलेजेस हैं, उनके साथ हम एमओयू कर सकते हैं। हमारा स्टूडेंट यहाँ लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट मेरी संस्था से पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी संस्था अगर इवनिंग कॉलेज है तो वहाँ से कोई 4 क्रेडिट का कोर्स भी ले सकते हैं जो मेरी संस्था में अवेलेबल नहीं है। वहाँ एडमिशन लेंगे, वहाँ फीस देंगे, वहाँ पढ़ेंगे, चाहे फेस टू फेस चाहे डिस्टेंस ऑनलाइन स्वयं से भी ले सकते हैं, और उसका क्रेडिट आप रिकॉग्नाइज करेंगे, क्रेडिट ट्रांसफ़र करेंगे, उसका क्रेडिट को आप रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरी संस्था से पढ़ा बट आप उसका डिग्री आप ही देंगे। हो सकता है स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन आपस में मर्जर हो जाए और
to add a department to make multidisciplinary like education. UGC guidelines for multidisciplinary institutions, departments and programs उसको पढ़िएगा इत्तेफाक से. I was a member of the committee. तो हम लोगों ने recommend किया है कि education department should be established in almost all colleges, 48,000 plus colleges in the country, and which will contribute to multidisciplinarity as well as which will facilitate implementation of NEP in that institution. स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशन जैसे आप देखेंगे एजुकेशन में है, मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, ये सब मल्टी डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाएंगे. 4 ईयर डुअल डिग्री बैचलर्स डिग्री होगा जैसे BA B.Ed, BSc B.Ed विच इज़ ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आफ्टर +2, उसको 2 डिग्री मिलेगा, BSc डिग्री एज वेल एज B.Ed डिग्री. वो आगे MSc कर सकता है या B.Ed के बाद M.Ed कर सकता है या BSc B.Ed के बाद स्कूल टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर भी बन सकता है. डुअल डिग्री का प्रावधान है UGC regulation 2022 which is legally binding, and therefore it supports that one face to face, one distance या online ले सकता है, या 2 face to face जो cluster college हो वहाँ से भी ले सकता है, या 2 distance learning online programs ले सकता है. joint degree program का प्रावधान हो गया है, पहले नहीं था. NEC जिसका 3.01 हो या टॉप 1000 इन QS या इंटरनेशनल रैंकिंग में हो या टॉप 100 नेशनल NIRF रैंकिंग में हो, रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो हमारे देश में है, तो उसके तहत हो वो संस्था इसमें डुअल जॉइंट डिग्री भी दे सकते हैं, उसकी प्रावधान है. एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस माई ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU, हम 2 डिग्री साइमल्टेनियसली ऑफर कर रहे हैं. 45 प्रोग्राम्स हमारा बास्केट में है जिसमें से स्टूडेंट चूज कर सकता है 2 डिग्री एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. हालांकि हम लोगों ने कहा कि 1 सेमेस्टर का गैप हो ताकि एग्जामिनेशन का क्लास ना हो. जनवरी साइकिल में अगर 1 डिग्री में एडमिशन लिया तो जुलाई साइकिल में दूसरी डिग्री में ले सकता है. कोई फेस टू फेस फुल टाइम पढ़ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, वो दूसरा डिग्री IGNOU से ऑनलाइन या कोई और डिस्टेंस लर्निंग संस्था से ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से दूसरा डिग्री ले सकते हैं. हालांकि डिफरेंट रेगुलेटर्स का क्लास ना हो तो उसमें डुअल डिग्री का क्लास ना हो, उसकी प्रावधान है. और PhD डिग्री डुअल डिग्री में शामिल नहीं है. आपके सामने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क है जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंदर आ गया है. आपके नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो स्किल कोर्सेज को डिफाइन करता था, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर से लेके डॉक्टरल लेवल तक उसको डिफाइन करता है, और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो तमाम और रेगुलेटर्स हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम से, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, IT हो, सभी एक ही क्रेडिट फ्रेमवर्क देश में आ गए हैं. सो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा. आप जो आगे से करिकुलम बनाएंगे आप नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत बनाएंगे, 2023 के तहत बनाएंगे, जिसमें 1 क्रेडिट इज़ 30 आवर्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड 1 ईयर ऑफ स्टडी इज़ 40 क्रेडिट. उससे आप अंदाजा कर सकते हैं. जैसे लेवल 4.5 आप देखेंगे, मैं फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड करूंगा, मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, मैं अपना काम में लग जाऊंगा, 1-2 साल के बाद वापस आऊंगा, तो फिर मैं सेकेंड ईयर करूंगा, मुझे आप डिप्लोमा दे दीजिए, फिर मैं वापस जाऊंगा, फिर थर्ड ईयर वापस आऊंगा. ये मेरी जो क्रेडिट्स हैं, ये मेरी क्रेडिट्स एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में शामिल होगा, उसकी भी मैं चर्चा करूँगा. आप लोग सभी संस्था इस पर आगे बढ़ जाइए. फॉर्मुलेशन कई तरह का है जो रेड कलर में आप देखेंगे. 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 2 ईयर मास्टर्स, ये भी एक फॉर्मुलेशन है. 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड 1 ईयर मास्टर्स. जब 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट होगा तो सेकेंड ईयर 2 ईयर्स मास्टर का सेकेंड ईयर विल बी कंप्लीटली डिवोटेड टू रिसर्च. जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा तो उसमें 1 ईयर मास्टर्स कर सकता है. 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद एक डायरेक्टली PhD में भी जा सकते हैं. और 5 ईयर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट का प्रावधान रखा गया है. इसमें कोई भी फॉर्मुलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपकी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो देश में चालू है तो आपके सामने है. इस वक्त UGC ने 40 क्रेडिट से ईयर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 160 क्रेडिट का बनाया, जो आप लोगों को बनाना है. दिल्ली विश्वविद्यालय 176 क्रेडिट्स में आगे बढ़ गया. 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ज़्यादा है UGC से, और सेकेंड सेमेस्टर इस वक्त चालू है. स्टेट लाइक कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, दे हैव ऑलरेडी गॉन अहेड विद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन 2020. उनकी the first batch of 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इसी साल कंप्लीट करके वो निकलेंगे.
इत्तेफाक की बात है कि कर्नाटका में आप वाकिफ़ होंगे कि नई सरकार जो है तो वो नेशनल पॉलिसी को और दूसरी ढंग से देखना शुरू किया है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि द वाइस चांसलर्स ऑफ द स्टेट दे हैव मेट द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, उनको इम्प्रेस किया कि सर ये सारा देश 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट में जा रहा है तो आप उसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश में फर्स्ट बैच ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दे विल ग्रेजुएट दिस ईयर, वो भी बहुत सारे और स्टेट्स इसमें आगे बढ़ गए हैं। मैं अगर आपके सामने थोड़ी जिक्र करूं कि गुजरात स्टेट हाल ही में थोड़ी दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर किया 2023-24 को हम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लागू करेंगे। उनके नॉलेज कंसोर्शियम ऑफ गुजरात तो उसमें इसको लागू करना शुरू कर दिया। एंड उन्होंने क्रेडिट बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे। जो डेवलपमेंट है जो न्यूज़ में है, बहुत सारे अदर स्टेट्स आगे बढ़ गए हैं जो लोकल न्यूज़ में हो सकता है जो आप लोग पढ़ रहे होंगे। 4 ईयर ऑनर्स, रिसर्च ऑनर्स, ये भी प्रावधान है कि हम एक 4 ईयर में ऑनर्स देंगे, अगर रिसर्च डोमिनेटेड हो रिसर्च ऑनर्स डिग्री देंगे। और ये 2026-27 को पूरा लागू हो जाएगा और कंपलसरी हो जाएगा। इसी वक्त प्रावधान है कि आप 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट में जा सकते हैं। गुजरात सरकार ने इस पर डिसीजन लिया है। दिल्ली में एज आई सेड सेकेंड सेमेस्टर में हम पहुंच चुके हैं। जो 176 क्रेडिट का आपके सामने जो फॉर्मुलेशन है आप देख रहे हैं, उसमें किस तरह का कोर्स होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा नज़र डालिए। पॉइंट नंबर 1, मेजर कोर डिसिप्लिन ऑलमोस्ट 50%। आपकी कोर डिसिप्लिन 100% हुआ करता था पहले, इस वक्त आप कोर डिसिप्लिन को 50% रखेंगे जो सफिशिएंट है टू कंटिन्यू द डिसिप्लिन स्टडी। और जो रेस्ट ऑफ द 50% क्रेडिट्स हैं, आप माइनर स्ट्रीम ऑफ द कोर डिसिप्लिन, स्पेशलाइजेशन, दूसरी डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन, अदर डिसिप्लिन से ले सकते हैं, कोई क्लस्टर कॉलेज से ले सकते हैं, कोई डिस्टेंस लर्निंग, कोई स्वयं कोर्सेस ले सकते हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स रहेगा, स्किल एनहांसमेंट कोर्स रहेगा, वैल्यू एडेड कोर्स रहेगा, समर इंटेंसिव और रिसर्च प्रोजेक्ट डिसर्टेशन जो 4th ईयर में ज़्यादातर रहेगा। हो सकता है रिसर्च का कोई स्किल और ईयर में आप डेवलप कर सकते हैं थ्रू स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। थोड़ा सा आगे पढ़ें टू कंक्लूड दिस पॉइंट। देयरफॉर फ्रेंड्स, this is point number 4, that as institutions and as students, we as teachers, we have to see that our institution gets admitted into the academic bank of credit, which is the national bank of credit। उसमें institution उसमें registered हो, उसको registration number मिले और आपके सारे students उसमें admitted हो और register हो। देयरफॉर वो जो क्रेडिट अर्न करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे, उनके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में चला जाएगा। वो जब भी चाहे उसको भुगतान करेंगे। फर्स्ट ईयर के बाद काम में लग जाएंगे, सर्टिफिकेट लेके क्रेडिट भुगतान हो गया, सेकेंड ईयर वापस आएंगे और इस तरह वो आगे बढ़ते रहेंगे। उनकी जो क्रेडिट डिपॉजिट रहेगा वो 7 साल तक रहेगा। वो कभी भी डिसाइड करें, कोई भी किसी भी तरह कोर्सेज वो लें, उनकी क्रेडिट बैंक में शामिल हो जाए। उसी लेवल का होना चाहिए, कोई अंडर ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। लेवल ऑफ कोर्स उसी लेवल में रहेगा और उसी में ही वो भुगतान कर सकते हैं, उसके मिक्सअप नहीं कर सकते। और जैसे लास्ट में आप देखेंगे, जो संस्था 50% मिनिमम डिसिप्लिन कोर में स्टूडेंट को कोर्सेज प्रदान करेगा और 50% स्टूडेंट बाहर से भी ले सकता है, वो संस्था उसी स्टूडेंट को, ग्रेजुएट को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करेगा। इसी वक्त यूजीसी चेयरपर्सन वेरी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिए हैं, उसको मैं पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन में है। ऑलमोस्ट 80 लाख स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड इन एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इग्नो के हैं और हमारा लगभग 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स अपनी क्रेडेंशियल, उनके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री डिजिटाइज करके उसको अपलोड कर चुके हैं। यूजीसी चेयरपर्सन का मानना है, वेरी रिसेंट इंटरव्यू में मैं पढ़ देता हूँ उनका। Indian institutions are also collaborating with foreign higher educational institutions to offer twinning, joint and dual degree programs, which will offer internationally relevant curricula to Indian students. Over 80 lakhs learners are on board to the ABC platform, and the UGC is actively promoting hassle-free credit accumulation, transfer एंड क्रेडिट रिडेम्पशन या भुगतान, उसको लेके वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री में जाएगा। सो टू कंक्लूड दिस पॉइंट फ्रेंड्स, आप लोग अपनी संस्था में संस्था को रजिस्टर करवाइए इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ऑल योर स्टूडेंट्स शुड बी रजिस्टर्ड इन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। जब तक वो रजिस्टर नहीं होते, उनके प्रीवियस क्रेडिट आवर्स प्रीवियस ईयर्स में अर्न किए हैं वो लागू नहीं होगा। और जब ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन के बाद
जितनी क्रेडिट कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्रेडिट अर्न करेंगे, उनकी उसमें शामिल होगा। दिस विल बी वैलिड फॉर 7 ईयर्स। वो आगे बढ़ सकता है या घट सकता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, 30 आवर्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग 1 क्रेडिट, and 1 credit face to face is 15 hours of classroom teaching in 15 hours of other student activities like seminar, projects, discussions, sports activities and co-curricular activities. तो उनका भी 1 credit will be 30 hours of teaching and learning. 1 credit is 1 hour of teaching, 2 hours of practical or 2 hours of distance learning and 3 hours of experiential learning or on the job training. इसी लिहाज से, इसी हिसाब से आप लोगों को क्रेडिट डिफाइन करना पड़ेगा। आपको कोर्स ऑफ एक्टिविटी, कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ भी क्रेडिट बनाना पड़ेगा और कोर्सेज के अंदर आपकी एकेडमिक टीचिंग, प्रैक्टिकम एज वेल एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसको आपको डिफाइन करेगा क्रेडिट आवर्स में। अगर आप 1 आवर ऑफ क्लासरूम लेक्चर दे रहे हैं, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसको आप ध्यान देना पड़ेगा। सो 1 क्रेडिट ओवर ए 14-week semester will be equivalent to 1 hour of teaching of face to face will be equivalent to 3 hours of experiential learning. इसको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को थोड़ा और ज़्यादा पढ़िए। उसकी एक डायग्रामेटिक फॉर्मुलेशन आपके सामने मिला के, लेफ्ट हैंड साइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड एग्जिट, इसकी फॉर्मुलेशन है। दूसरा जो खाना आप देख रहे हैं, दैट स्किल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन का बराबर इक्विवेलेंसी as well as credit transfer, horizontal and vertical. तीसरा personal learning as well as experiential learning and on the job training. वो अगर आप on the job training में हैं, for instance you are in hospitality and you would like to do an MBA hospitality for instance, तो आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके नेशनल टेस्ट में आप बैठे हैं तो आपके 10 क्रेडिट शामिल हो जाएगा। आपको 10 क्रेडिट दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। दिस विल गेट इनटू योर एकेडमिक। 10 क्रेडिट आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत ट्रांसफर हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। एंड फाइनल जो खाना है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इनटू क्रेडेंशियल्स। इसका मतलब है जो एग्जाम्पल से किसी भी लेवल पर हो, लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड ऑफ दैट लेवल, यही आपका स्किल क्वालिफिकेशन है, तो आपकी क्रेडेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, अगर आप उतना नेशनल टेस्ट में पास करते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम डिज़ाइन हम लोगों को में चले गए होंगे। 176 क्रेडिट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने आपको दिखाया, और भी वेरिएशंस 3 years or 4 years, a master's degree, M.Tech and Masters of Engineering and so on and so on. आपके फ्लेक्सिबल प्रोग्राम डिज़ाइन कैसे होगा? इंटीग्रेशन बोर्ड टू मेक इट मल्टीडिसिप्लिनरी एंड टू एक्सपांड द हॉराइजन एंड टू मेक एजुकेशन। सारे संस्था, प्रोफेशनल संस्था, उसमें आर्ट एजुकेशन, सोशल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, उसी के तहत वो डेवलप होना चाहिए। डीजीसी हैज़ ऑलरेडी करते हुए स्किल बेस्ड कोर्सेज को डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोफेसरियल पोजीशन जो फुल टाइम होगा या पार्ट टाइम भी हो सकता है, और जिनके पास पीएचडी ना उसी एरिया का एक्सपीरियंस है, और उसके टेस्ट के बेसिस पर दे विल बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। इनफैक्ट द यूजीसी हाल ही में उसको डिक्लेयर किया था दैट प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस बास्केट विच हैज़ बिन डेवलप्ड बाय यूजीसी, आप उसका भी फ़ायदा उठाइएगा। जो पोर्टल है यूजीसी पोर्टल, उसमें प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस का लिस्टिंग है, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम टू जॉइन। दे हैव बीन अपॉइंटेड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस एंड देयर एक्सपीरियंस, एंड मोर सो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको कहा, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट होगा, जिसका एग्जाम्पल हमने देखे। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, स्वाध्याय, सेल्फ लर्निंग इंक्लूडिंग ओपन एजुकेशन रिसोर्स, डिजिटल रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स। फेस टू फेस इंक्लूडिंग टीचर्स लेक्चर, ट्यूटोरियल, डिस्कशन, सेमिनार, हैंड्स ऑन अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप। और तीसरा ऑनलाइन कोलैबोरेशन, जिसमें स्टूडेंट आपस में प्रोजेक्ट साथ कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पोर्टफोलियो बेस्ड लर्निंग, डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ये 3 तरह का आप देख लीजिएगा। फेस टू फेस में ज़्यादा देंगे, सेल्फ लर्निंग में कम देंगे एंड ऑनलाइन में कम। डिस्टेंस लर्निंग में सेल्फ लर्निंग एंड ऑनलाइन कोलैबोरेशन ज़्यादा है और फेस टू फेस कम होगा, और उस कोर्स के लिए होगा जहाँ स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, जहाँ फेस टू फेस हैंड्स ऑन इज कंपलसरी। सो ये फॉर्मुलेशन आया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी डिलीवरी स्ट्रैटेजी हैज़ टू कंबाइन दिस 3 काइंड्स ऑफ फॉर्मुलेशन। ओपन एजुकेशन रिसोर्स आ गया है, जो क्रिएटिव कॉमन के तहत डिक्लेयर है। क्रिएटिव कॉमन इज इंटरनेशनल लीगल ब्रोकरिंग अथॉरिटी, जो आपकी रिसोर्सेज को प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, डाटा, ये तमाम चीज़ों को कन्वर्ट करता है इनटू फ्री रिसोर्सेज। कॉपीराइट इज C, कॉपीराइट फ्री, क्रिएटिव कॉमन इज C।
तो जो आपकी कोर्सेस या रिसोर्सेस, प्रिंट, ऑडियो, वीडियो जो क्रिएटिव कॉमन में डिक्लेयर हुआ है उसको आप खुलेआम इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर सर्टन कंडीशंस या प्री कंडीशंस, वो आपके सामने है। हालांकि या जो क्रिएटिव कॉमन CC में नहीं है, कॉपीराइटेड है, एवरीथिंग एनीथिंग अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉपीराइट। बहुत ध्यान रखिएगा, उसको कभी भी कोई सेंटेंस, कोई ग्राफिक्स मत उठाइए, बिकॉज दैट विल बी प्लैगियरिज्म अनलेस it is declared under Creative Common called CC। Therefore friends, 4 quadrant मुख्य है जो आपके स्टूडेंट्स यहाँ भी कोर्स ले सकते हैं। दिस इज़ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, डिस्कशन फोरम है। IGNOU लगभग 193 कोर्सेज उसमें शामिल किया है। 126 कोर्सेज हमारा बहुत सारे यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन सब लोगों ने अडॉप्ट कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत सारे कोर्सेज, 3000 प्लस कोर्सेज आर अवेलेबल। आप उसको भी अपने स्टूडेंट्स को कहिए, आप क्लासरूम में ना पढ़ाएं और स्टूडेंट वहाँ से कोर्स लें और आप क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जनवरी 2023 तक 13.5 लाख स्टूडेंट्स हमारा एडमिटेड हैं और 2.5 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। और ये सब कोर्सेज कंप्लीशन विल बी ट्रांसफर्ड इनटू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, उसके खाते में स्टूडेंट का चढ़ जाएगा। वेरियस मीडिया टूल्स आर अवेलेबल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दीज आर ओपन सोर्स टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको बहुत कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट ट्रांजैक्शन, स्टूडेंट एंगेजमेंट, एक्टिविटीज़, असेसमेंट, ये तमाम चीज़ों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो करना चाहिए और जिसके स्किल हमारा डेवलप होना चाहिए। आज की तारीख में स्टूडेंट कंटेंट, स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। और टेक्नोलॉजी दो तरह का, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। इसी वक्त हम सिंक्रोनस है, हम दूसरी जगह में बैठे हैं लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एसिंक्रोनस, हम दूसरी जगह बैठे हैं पर दूसरी टाइम में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस सेंडिंग एन ईमेल एंड रिस्पॉन्डिंग टू दैट इज एसिंक्रोनस। सो ये 3 तरह का इंटरेक्शन और 2 तरह का सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, इसमें जो मीडिया में लिस्टेड किया हूँ इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप टीचिंग लर्निंग में शामिल कीजिएगा। डिजिटल कॉम्पिटेंसी हम लोगों का डेवलप होना चाहिए। एक फॉर्मुलेशन आपके सामने में रखा हूँ कि बेसिक डिजिटल स्किल्स तो जरूरी है जो हम सब लोग वर्कशॉप में कराते रहते हैं, लेकिन उससे थोड़ा आगे चाहें तो कि ICT जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिजिटल मीडिया है, स्पेशली ओपन सोर्स मीडिया है, उसको हम डायडैक्टिक टीचिंग लर्निंग में, डिसिप्लिन पेडागॉजी में कैसे ले जाएं, और फाइनली इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग हम कैसे करें, जिसको मैं लर्निंग स्ट्रैटेजी यहाँ लिखा हूँ फिगर में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। These kind of skills are essential, friends. Therefore, our professional development should also gear towards these. Information and data literacy हमारा होना चाहिए। Digital resource development, design development, delivery, problem solving through technology, communication and collaboration skills, and digital safety and ethics. ये बहुत बड़ा ज़रूरी हो गया है, ethics and digital safety। इसको भी आप ये स्किल डेवलप करिएगा। ये जो है अबाउट रिसर्च, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है हम आज तक अपने डिसिप्लिन में रिसर्च करते थे जिसमें हमको API और CES मिलता था, लेकिन इस वक्त वी विल मूव टूवर्ड्स स्कॉलरशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आप अपने टीचिंग लर्निंग डिफरेंट डिसिप्लिन का पेडागॉजी के ऊपर रिसर्च करेंगे जो आपके डिसिप्लिन रिसर्च के साथ बराबर होगा, उसमें API मिलेगा, तमाम होगा, इक्विवेलेंसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। देयरफॉर वी शुड मूव बिसाइड्स आवर डिसिप्लिन रिसर्च टू रिसर्च ऑन डिसिप्लिन पेडागॉजी। आप अपने डिसिप्लिन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग, लर्नर सपोर्ट, उसके ऊपर अगर रिसर्च करेंगे वो आपकी टीचिंग लर्निंग में कंट्रीब्यूट करेगा। NEP-2020 क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन, इसके बारे में मैं थोड़ी सी टच करते हुए आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन के बारे में, क्रॉस बॉर्डर एजुकेशनल डिलीवरी एंड क्रॉस बॉर्डर क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये NEP-2020 में शामिल है। और UGC का जो रेगुलेशन है, ट्विनिंग प्रोग्राम, डुअल डिग्री एंड जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, उसको भी 2022 को उसको पढ़िएगा, उसमें क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन डिलीवरी है, उसके ऊपर चर्चा है। और क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन डिलीवरी का रेगुलेशन UGC का, उसको भी देखिए। इसमें मुद्दा ये है दैट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम आउटसाइड वो हमारी यहाँ कैंपस आएंगे, हमारा संस्था बाहर जाएंगे और ये प्रोसेस शुरू हो गया है। और जो क्रेडिट करेंगे अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट वो बाहर से ले सकते हैं, वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। डुअल डिग्री का भी प्रावधान है, जॉइंट डिग्री का भी प्रावधान है। सो क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम सभी संस्था को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म जिसमें आप ज्वाइन किए हैं, दिस इज़ योर समर्थ प्लेटफॉर्म
and your SWAYAM platform. Different links are given over there, and get into COE Live. जो COE Live इस वक्त आप देख रहे हैं उसको एक्सेस करिए. इन YouTube में बहुत सारे वीडियोज़ आप उसमें आगे बढ़िए. इसमें रिसोर्सेज हैं, इसमें आप शामिल हैं. ये हमारा 2 क्रेडिट कोर्स है फॉर हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स. मैं और डॉक्टर ग्लोरिया मेरे साथ बैठी हैं, तो हम लोग इसको ऑफ़र कर रहे हैं. तो इसमें लगभग अगर मैं आपको आंकड़ा दूं, हमारा इसी वक्त लगभग 70,000 टीचर इसमें शामिल हो गए हैं. जो NEP-PDP में जिसमें आप लोग हैं, लगभग 40,000 उसमें कंप्लीशन तक पहुंच गए हैं. और NEP जो 2 क्रेडिट कोर्स आपके सामने हैं, इसमें लगभग 4,500 इसमें एडमिटेड हो चुके हैं. दिस इज़ द 3rd बैच, एंड फॉर योर NEP-PDP दिस इज़ द 14th बैच. सो देयरफॉर फ्रेंड्स, आप इसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाइएगा. मैं 1-2 प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हाल ही में, बहुत ही हाल ही में डिक्लेयर किया है. दैट CBSE ने डिक्लेयर किया है. प्रयोग एक प्लेटफॉर्म है, mandatory program aiming to facilitate implementation of national education policy. This is a training program for principals. It's an online 2-day training program. आप स्कूल प्रिंसिपल्स को भी बताइए. +2 किसी स्टेट में जूनियर कॉलेज है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं. तो इसमें सफल HPC, SQAA, experiential learning, competency based education, art integrated learning, story telling, sports based learning, ये तमाम चीज़ें टॉपिक्स इसमें शामिल हैं जो स्कूल लेवल की टीचिंग लर्निंग में मदद करें. दिस इज़ ए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम nationally that has come up. Many other, including UGC, AICT, they are also coming up. But so far, the two PowerPoints that I showed you, including the 2 credit as well as NEP-PDP, is the national program. आप इसमें शामिल हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसको आप कंप्लीट करने के लिए कोशिश करें. आप अपने कोलीग्स को इसमें शामिल होने के लिए कहिए. ये आपका रिसोर्सेस हैं जो आपके स्वयं प्लेटफॉर्म में आपके पड़े होंगे. वीडियो प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग डॉक्टर कस्तूर रंगन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमेटी की चेयरपर्सन रहे, उसी चेयरपर्सन, फॉर्मर AICT सेक्रेटरी, चेयरपर्सन प्रोफेसर सहस्रबुद्धे, फॉर्मर AICT रेदर NEC चेयरमैन प्रोफेसर पाटवर्धन, NCERT डायरेक्टर प्रोफेसर काटिमणि, प्रोफेसर JS राजपूत, पद्मश्री राजपूत, हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव, AIU सेक्रेटरी जनरल, नीपा वाइस चांसलर, NCERT डायरेक्टर, ये सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट की हैं, जो रिसोर्सेज आप स्वयं प्लेटफॉर्म में देखे होंगे. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. विद दिस आई कंप्लीट द प्रेजेंटेशन एंड आई इनवाइट माय कोलीग Dr. Gloria, and if you have any questions, we would like to, whatever time available, we will try to respond to you. Thank you very much. Student initiative कैसे होगा? Student. Welcome viewers to the question answer session. Thank you very much sir for a very interesting and informative presentation. We hope our viewers have greatly benefited from your lecture. We also regret that there has been some network issue, and this video will be available online in YouTube. You can watch it later also. So some questions I'll read out. At the college level, internship will be a problem due to large number of students. How do the college deal with this? देखिए, इंटर्नशिप कंपलसरी हो रहा है. इंटर्नशिप आप अपने शहर में करवा सकते हैं. AICT came up with 3,000+ वर्चुअल इंटर्नशिप्स. एक वर्चुअल इंटर्नशिप जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं. इंटर्नशिप को आप अपनी कॉलेज और अपनी जो शहर या अपनी जो भी संस्था है, जगह है, उसके हिसाब से ओरिएंट कर सकते हैं.
इंटर्नशिप के लिए आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं, लाइक प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वो आके आपको कॉलेज में इंटर्नशिप करवाएं भी है। इंटर्नशिप इज नॉट गोइंग आउट एंड सिंपली गेटिंग एन अटैचमेंट, बट ऑल्सो इनवाइटिंग एक्सपर्ट्स टू डू इंटर्नशिप इन योर कॉलेज। जो लार्ज नंबर होगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा और उसके लिए प्रावधान भी बढ़ना चाहिए। देयरफॉर द पॉइंट हियर इज दैट सही एक्सपर्ट हो और कार्यशाला भी सही हो और उसमें प्रावधान भी बहुत बड़ा हो। जितने नंबर बढ़ेगा उसके प्रावधान होना चाहिए। और वर्चुअल इंटर्नशिप जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल में ना हो वो भी उपलब्ध हो, उसको भी कराया जा सकता है। तो ये कुल मिला के ग्रेजुअली वी हैव टू फॉर्मुलेट ए स्ट्रैटेजी कि हम इंटर्नशिप को कैसे करें। लेकिन बात तो सही है कि अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप जो है आपको एक चीज़ों को निभाने के लिए टू ट्रांसलेट दैट इनटू एक्शन एंड देयरफॉर द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट इन फ्यूचर, वो हम लोगों को प्रावधान करना पड़ेगा। दिक्कत तो रहेगी, चैलेंजेस तो जरूर रहेगी। Next question is, how a flexible program can be designed for college students? देखिए, कॉलेज स्टूडेंट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का आपने फ्लेक्सिबिलिटी देख लिया। उसमें डिसिप्लिन कोर 50% है, 50% अदर योर डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशंस, इलेक्टिव्स और फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। कोई भी डिसिप्लिन से स्टूडेंट लेना चाहें जो उसको फ़ायदा लगेगा और डिस्टेंस लर्निंग से ले सकता है, और स्किल बेस्ड कोर्सेज उसको लेना ज़रूरी है। कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, वैल्यू एडेड कोर्सेज, आर्ट एजुकेशन कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज, ये सब उसके जो काम में लगेगा ये तो करना पड़ेगा। योर करिकुलम हैज़ टू बी डिज़ाइंड अकॉर्डिंगली। अगर आप कहेंगे ये कोई लैंग्वेज में या कोई म्यूज़िक लेना चाहता है, हमारी प्रावधान नहीं है, लेट द स्टूडेंट टेक म्यूजिक फ्रॉम अनदर ऑनलाइन और ए क्लस्टर कॉलेज फ्रॉम द सेम सिटी और मे बी फ्रॉम सोएम, फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप उसको प्रावधान रखिए और उसको स्टैट्यूटरी बॉडी में पास करवाइए और स्टूडेंट ऑन टाइम उसको कंप्लीट करें। उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा थ्रू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। सॉरी। तो इसलिए ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम है इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। Next question is, how can a rural college implement NEP 2020 with poor infrastructure? देखिए, ये तो बुनियादी सवाल है कि साहब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये तो मुद्दा ज़रूर है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होना चाहिए। कॉमन मिनिमम तो ये ज़रूरी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडिंग फैकल्टी एज वेल एज फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेस, ये 4 चीज़ें कम से कम मिनिमम लेवल पर शामिल होना ज़रूरी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। लेकिन साथ साथ ये भी फैक्ट है, ये 4 चीज़ों में आप इनोवेशन कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे संस्थाएं इसको प्रिनोवेट, मीनिंग देयर बाय कम रिसोर्सेस में ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स को वो कर रहे हैं। इसमें मेहनत ज़्यादा लग रहा है। तो ये सब स्ट्रैटेजी कुल मिलाते हुए इसको तो प्रावधान तो तैयार करना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर डेवलपिंग एन इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, उसमें ये तमाम कॉन्स्टेंट्स को शामिल कीजिएगा और उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और सरकारी प्रावधान, बहुत अच्छी बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज सेड दैट एजुकेशन इज़ अ पब्लिक गुड, meaning thereby the responsibility for education is by the government, by the public authority। हालांकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए, कमर्शियलाइजेशन ना हो, लेकिन प्राइवेटाइजेशन बढ़े। प्राइवेट इनिशिएटिव तो जरूरी है, लेकिन सरकार को भी काफ़ी हद तक एजुकेशन पर, देयरफॉर जो 6% ऑफ GDP NEP ने फाइनली बात किया है, वो मैं उम्मीद रखता हूँ अगर वो 6% सरकार इन्वेस्ट करें ऑफ द GDP ऑन एजुकेशन, काफ़ी चीज़ें प्रावधान हमारा आगे बढ़ जाएगा। सो मैं आपके साथ सिर्फ उम्मीद रख सकता हूँ, लेट अस होप दैट द गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन एटलीस्ट मिनिमम 6% ऑफ GDP, और उससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। We will take up the last question. The teaching learning process has changed drastically in the recent past. So how the students will be able to embrace this change and take up active learning? देखिए, वो आपके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। स्टूडेंट का स्किल भी डेवलप करना, लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के बारे में ज़रूरी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पोर्टफोलियो बेस्ड लर्निंग, ये नई चीज़ें हैं। तो
तो इसलिए स्टूडेंट को भी टाइम लगेगा, वी एज टीचर्स हम लोगों को भी टाइम लगेगा, हम लोगों को सीखना पड़ेगा। देयरफॉर दिस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, HRDC, TLCs, टीचिंग लर्निंग सेंटर्स एंड मेनी अदर संस्था विच आर डूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, मेरे मानना है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम या जो फीस लेके उसको कर रहे हैं उसको पूरा कॉम्पिटेंसी डेवलप कराएं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू चार्ज अ फीस एंड टू डेवलप, बट फीस मिनिमम होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री की तरह 50,000 1 लाख का कोई फ़ी हो, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन वी एज टीचर्स वी हैव टू डेवलप दिस कॉम्पिटेंसीज। Second, we have to design our curriculum accordingly. And three, we have to implement this competence by using these competencies in the transaction of our curriculum in teaching learning. हम जब करेंगे, स्टूडेंट ऑटोमेटिकली विल गेट इन्वॉल्व इन स्टूडेंट एक्टिविटीज़। स्टूडेंट का स्वाध्याय, स्टूडेंट का टीचर के साथ लेक्चरिंग के साथ पढ़ना और स्टूडेंट का एक्टिविटी में इंडिविजुअली और ग्रुप में एंगेज होना और पोर्टफोलियो बना, पोर्टफोलियो शुड बिकम कंपलसरी। ये चीज़ों को हम मिनिमम करिकुलम और असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग जो हमने बातें की हैं उसको लेके अगर हम चलें तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग विल इंक्रीज एंड एम्प्लॉयबिलिटी विल इंक्रीज। बट ये सब के लिए टीचर का और स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है और इसको साइड बाय साइड कराना पड़ेगा। अदरवाइज बाय सिंपली सेइंग वी आर इम्प्लीमेंटिंग एंड इन फैक्ट इट विल रिजल्ट ऑन सिंपली शोकेस रेदर देन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, वो कॉम्पिटेंसी नहीं बढ़ता है। तो इसको हमको तो शामिल करना पड़ेगा वो टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। देयर आर दो बातें यूजीसी चेयरपर्सन ने कहा है इस सिलसिला में। मैं आपको उत्साह का एग्जाम्पल दे चुका हूँ दैट लर्नर सेंटर इनिशिएटिव्स जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं वो उत्साह प्लेटफॉर्म यूजीसी में शामिल हो, दूसरे संस्था और टीचर्स उसकी फ़ायदा उठा सके। दूसरी बात चेयरपर्सन यूजीसी ने कहा है कि एनईपी स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, स्टूडेंट का भी ओरिएंटेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हो एंड दे बिकम, आई विल रीड आउट, if you see the recent initiative of UGC such as NEP Student Ambassador for Academic Reforms in Transforming Higher Education, जिसको कह रहे हैं सारथी, इसको तो इम्प्लीमेंट हम सबको मिल के करना पड़ेगा। दैट द स्टूडेंट्स विल बिकम एम्बेसडर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स, सारे नहीं, कुछ स्टूडेंट्स दे विल बी डेवलप्ड एज ट्रेनर्स, that they will be advanced students who will take initiative in implementing NEP. We are trying to build a culture of innovation and experimentation in higher education. There is a lot of emphasis on collaboration and outreach जो students उसमें मदद कर सकते हैं। So उत्साह और सारथी इन दोनों का भी हम फायदा उठा सकते हैं और उसमें हम लोगों को पहले as teachers we have to be acquainted and then we have to take selected students forward, willing students, competent students forward to take the initiative for the implementation of NEP 2020। उनका शामिल होना और नॉन टीचिंग स्टाफ का शामिल होना और कम्युनिटी का शामिल होना इसमें बहुत ज़रूरी है। So viewers, with this we will conclude today's session. I once again thank Professor Santosh Panda, today's resource person, for a very enriching lecture and request our participants to please go through the e-contents and videos that are available in Swayam portal that you can access from the link that has been provided to you in the welcome message from Swayam. Also, please attempt the 15 discussion forum and 35 final test MCQs between 18th to 20th June. Participating teachers who will secure 50% and above in both the tests together will get the course completion certificate. So best wishes, thank you, नमस्कार। और इसके बाद 2 वीडियो प्रोग्राम आपके चलेंगे, उसको वीडियो को आप देखिएगा जो स्वयं में उपलब्ध है, अगर नहीं देखें उसको देखिएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि आप 35 MCQ फाइनल और 15 MCQ डिस्कशन फोरम में उसको आप कंप्लीट करेंगे और 50% मार्क के साथ ज़रूर इसको आप कंप्लीट करेंगे, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप स्वयं के अंदर जाएंगे ये सब चीज़ करने के लिए, ये यूट्यूब में नहीं होगा। आप समर्थ में रजिस्टर हुए हैं, स्वयं में आप गए हैं और स्वयं में नहीं गए हैं तो जाइएगा, रिसोर्सेज को पढ़िए, डिस्कशन फोरम का टेस्ट दीजिए और फाइनल 35 MCQ फाइनल टेस्ट दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि वहीं आपका टेस्ट होगा और सर्टिफिकेट वहीं से आपके पास डिजिटली आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।
Now, before I start with the actual presentation of the policy itself, I will spend a few minutes with respect to the relevance of education in the present context. A lot of things have been asked to me in public with respect to why at this time an educational policy? What kind of relevance does it have in the context of India and the context of the global developments? And always you have to articulate some aspects of it. Of course, first we all recognize there's more than 3 decades since we had the last one, and there are several developments that have happened. India, of course, will have the highest population of young people in the world over the next decade, and we recognize that nearly 50% of the population will be below 35 years of age, aspiring for high quality education. This democratic dividend certainly has to be taken advantage of. I don't think we have discussed it in several platforms. We have debated it, and certainly this is a direction and aspiration for the country which we have to realize. Globalization and demands of a knowledge economy and knowledge society call for emphasis on the need for acquisition of new skills by learners on a regular basis for them to learn how to learn and become lifelong learners, a critical consideration to be addressed appropriately. And that is where this education policy certainly has focused on. Changes in knowledge landscape, especially science and technology, I'm going to have to say here, with advances in big data analytics, machine learning, artificial intelligence, all demand skilled workforce involving mathematics, computer sciences, data science, as well as multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences, and humanities. The education of future need to be reconfigured in order to meet the goals of the global education development agenda. We are a part of that. The goal 4 of the Sustainable Development Goals 4 of 2030 that seeks to ensure inclusion and equitable quality education and promote lifelong learning for opportunities for all. So this is broadly just to give it kind of a flavor of the kind of consideration probably the people who matter in terms of defining when to come out with a policy thought about. Now, how did we go about? A little bit of that also is of interest for the audience here. The process, of course, was that we had the members of the policy committee with the government set it up. And then we had a members of a drafting committee. We thought that besides the policy framing, we also need to bring it up in a way in which it can be presented. We had a special drafting committee. It had members of the policy committee also. And then we had a set of members, experts, who provided a kind of a technical secretariat support for doing this. And not to be satisfied with it, this is where I have my own strong views. The question of being independently evaluated with respect to the type of presentation we are making, ideas that we have created, and the strategy we have crafted. We put certain peer reviewers, people who are away from the policy formulation, who are very well aware of the kind of educational system, the academic system this country over the years, and therefore competent enough to give us very vital inputs about the first level of drafting this policy. So there were peer reviewers here. Discussions and consultation, we went through a very, even though this particular policy was initially having a basis of previous policy document, in fact, 4 years of work, very intense work had gone through in the formulation of this policy earlier itself. Documentation from downward consultations were there, submissions from individuals and groups were there. So there was the previous Honorable Minister of Education. We had also the TSR Subramaniam Committee and many others. So we had many things to fall back on. The question was to review them, to adopt them, and to see where we need to move extra efforts. And that is where we saw that discussions and consultations with the different stakeholders, including organizations, institutions, and individuals. We had quite a number of inputs which were new, which had very unique in terms of things which were not earlier presented or considered for discussion. And of course, when everything was ready and when we made an initial presentation to the ministry, they felt that ultimately to go into the public domain is a national, very important national document. We need to get the public responses of what they are in for the future of education. We got more than 2.5 lakh responses from both from the school and the college education, higher education point of view. So that was another major thing. We went through a consultation with the state educational authorities, including in many of the states, we had also consultation with the state ministers.
And then we had a review, so that when the policy was in the near final stages, the number of reviews were conducted by the Honorable Prime Minister himself. In fact, he went through every aspect of the policy and every items of the policy, and he wanted to make sure that there is a level of pragmatism and the ability to carry this forward in the implementation domain. So this is one of the important things that the Honorable Prime Minister, he came out with several interesting suggestions also, I should mention. So that is the other part of it. And finally, we got the cabinet approval on the 29th of July 2020. Immediately following that, for a number of measures, the first and foremost was to make sure that there is a very intense familiarization process for this. So major conferences with chancellors, vice chancellors, directors of higher education institutions, other high-level functionaries were convened. These are meetings convened by UGC and Ministry of Education and addressed by Honorable Prime Minister and His Excellency the President of India. So these were kind of things that were also carried. This also underscored the importance at the highest level that they attach to the policy. And now we are in the stages, and I will say at the end of my talk a little bit about how the concerned agencies and the ministry is moving towards the implementation. Now, to just give a framework for the policy provides an integrated and flexible approach to education. It has kept the interconnectedness, the various phases of education in mind, and how the same will enable continuity, coherence, and processes to ultimately realize an end-to-end educational roadmap for the country. An articulation of a broad view of education encompassing the holistic development with special emphasis on kindling of the creative potential of each individual in its richness and complexity has grown increasingly popular in the recent years, several domains of discussions. The policy thus aims to have it aims at the development of the 21st century skills. I don't have to re-emphasize what these 21st century skills are here for the students, while giving them the flexibility in making choices consistent with the dynamics of a knowledge society. Before we go straight into the higher education and go into the details of the same, a little bit about the connection between the school education and the higher education. We do recognize, all of us, and the policy does so, the interconnectedness of the various phases of education. I mentioned it earlier. School education is of intrinsic importance, there's no question. How a student experiences the schooling phase of education could have a significant influence on those subsequently pursue higher education, including professional and vocational, besides, of course, helping to lay the foundation for lifelong learning. So keeping this in mind, I'm trying to first put the overall policy element, the element that is gone into the policy as a part of the academic side, not just on the governance and other areas. We have the early childhood care and education, home education, Anganwadis and preschools. One of the very key elements, because we did make transformatory recommendations in the context of the early school education. I will say a few words about it in the subsequent projections. And right now it is divided over a 15-year period of foundational, preparatory, middle, and secondary. We'll see the details of that. On the higher side, of course, we have the undergraduate, general education, teacher education, professional and vocational to focus a little bit. And then we have the postgraduate, masters, and PhD, need not be emphasized here. And ultimately, a national research foundation, a unique institution that will spur the research, and particularly in the educational institution and university system particular. And then, of course, we have areas like lifelong learning, adult education, and many other areas that have been also including the use of technology for education. These are all part and part. So this is just the broad elements of the policy which you have touched upon in the policy. And I will, of course, as requested, I will try to concentrate on the higher education, but not before saying a few words about the kind of things that we have thought about in bringing the school education to a new domain. The extent 10+2 structure is what the early school education will be. It will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5 plus 3 plus 3 plus 4, covering the ages 3 to 18. I have shown it here in terms of 4 levels. The foundational level, where the policy, this is the education starts, unlike at 6 years, now it starts at 3 years. 3 to 8 years is what we characterize the first 5 years as the foundational
phase of the school education, 3 years of pre-primary, preschool, and then we have a primary education, which is first and second class, the grades. So you have the 5 years here. What is important in this phase, which will take you up to the age of 8, is the fact that the policy recognizes the individual differences in the cognitive development of children at this stage, and therefore formal structured learning will be absent during these 5 years. So the important thing is that each child has to be evaluated with respect to its growth of the brain, and these are not uniform, so there is no linear pattern in which the growth occurs. And it's also important that 85% of the brain virtually is matured by the age of 8. So we need to make sure that the learning process is suitably adopted, that maximal advantage of this kind of a pattern by 85% by the age of 8 is whether it is language learning, whether it is literacy and numeracy. These are all critical elements in this phase of the foundational phase of the school education. This you carry forward a little more from unstructured, you go into the curricular structure in the next 3 years, that is from age 8 to age 11, where the curricular structure and standardization can be slowly introduced. And carrying this forward for the next 3 years, you virtually go into subject areas. You have a teacher children student interaction much more effectively, and also have the capacity for abstraction, because that is something which was the earlier two phases much less because of the nature of the brain growth. And lastly, we have the secondary education, the last 4 years of school education, ages 14 to 18. There will be multidisciplinary orientation with exit options. This is the phase that will prepare the student for undergraduate program, and that's why I'm coming to this, because undergraduate program is very much related to the kind of orientation in the policy that we have tried to create in the secondary level of the school education, including early introduction of liberal arts education. So this is the kind of a thing. Of course, you have vocational education here, you have the exit option here. If you want to leave at the age of 18, the school education and take up some kind of a job, there are enough provisions for that, enough training and other kinds of things. In fact, we have recommended that we need to have a youngster who knows at least one vocational area thoroughly, 100%, in by the time he leaves the school, that kind of a thing. And the first 4 elements of the vocational education in the overall scheme is a part of the secondary and part of the middle as well as the secondary education. So this is the broad thing. I thought I wanted to emphasize this mainly because these are the times in we understand today the neural sciences and the kind of cognitive science which dictated this study of creating a policy around the present understanding of the brain and its growth. And I thought I should bring it to the attention of this erudite audience. And this is just to give you an idea of a brain, how critical it is to make sure that we make use of the brain and its stimulation, the early phase of the child's growth. And one can see very clearly the cognitive stimulation, what it does to the brain, to a case where such a simulation has not occurred. We can very clearly see the temporal lobes, how different they are in terms of its growth and maturity, and which essentially means how much you take advantage of the pattern of the brain growth in terms of the learning process and also the teaching process. Now, having said all this with respect to the school education, we move over to the undergraduate education, part of the higher education. What the policy does is to promote a holistic. We have made a broad approach which is holistic and multidisciplinary at the undergraduate level. And this is something which is not new to this audience, and especially I don't know IIT Delhi's some of the very early efforts in the context of holistic and multidisciplinary education. They generate more imagination and creativity in the student to ensure their all-rounded development. And of course, the concept which we today turn as a liberal education, which is really multidisciplinary and holistic, is an age-old idea in the Indian context. I don't have to say this again, the Banabhatta's Kadambari, which is considered a person was recognized as truly educated when he mastered the 64 kalas encompassing music, dance, painting, culture, languages, and in addition to subjects such as science, engineering, and mathematics, as well as vocational subjects. Liberal education explores the remarkable relationships that exist among the sciences and humanities, mathematics and arts, medicine and physics, etc., and more generally,
the surprising unity of all fields of human endeavor. A comprehensive liberal education develops all capacities of human beings: intellectual, aesthetics, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. So, this is the approach, and this is the one we have tried to translate into the policy as a crucial step to lead India into the 21st century. The fourth industrial revolution, multidisciplinary education is central. Even engineering schools, I know IITs following this, in this case, will move towards more holistic multidisciplinary education with more arts and humanities. While arts and humanities students will have to learn more science, while all will try to make an effort to incorporate more vocational subjects and soft skills. India's rich legacy, I mentioned about Bhatt's work and many other kind of work subsequently in the arts as well as in sciences and beyond, will significantly help in making the move towards such an education, hopefully an easy and natural transition. Now, how is it that the policy has put that in concrete terms? Liberal education with broad multidisciplinary exploration, it has to be an imaginative and flexible curricular structure, creative combinations of disciplines of study. This has been chosen, whether it's arts, crafts, sciences, mathematics. One has to see how do you create a creative combination. This has to be all worked out. And multiple exit and entry option is another important feature of the undergraduate education. And master's and doctoral education will provide a sub-based specialization as a part of the higher education. The 3 to 4 year undergraduate course with multiple exit options. The 4-year program is the main recommendation in terms of the undergraduate program. Undergraduate degree will encompass, of course, liberal arts, multidisciplinary and holistic education. And then you have the chosen major and minor concept that is there. We have the vocational subjects, and later on, even professional education will be brought into this kind of an undergraduate education, which is a 4-year. The 3-year program, which is currently very much there, will be retained with the necessary changes to bring in more holisticity and interdisciplinarity. Both the 3 and 4-year programs lead to a degree with honors with research work. So that is another thing that one. So there is a provision for research work in the undergraduate program, which prepare on one side, it really enriches the youngster, on the other side, we certainly have a better preparation for the higher education. And ultimately, exit provision does exist with a 2-year diploma in the with a 2-year diploma at the end of 2 years of undergraduate, and a 1-year certificate at the end of the first year of the undergraduate education. These are all drawn in a way in which there is enough provision for the person when he exits, he will have an appropriate kind of a professional career which can be chosen. And this is a preparation that you try to do in the first year and second year of the undergraduate education, with the proviso that in case in the later years you want to come back to the education with certain provisions with respect to the preparatory part of the entry, you can still continue your education to a 3rd year or a 4th year or even higher education part of the postgraduate education. This is also kept as a flexibility in the system. On the master's side, 2 years for those with the 3-year undergraduate degree, 1 year for those with the 4-year undergraduate degree with honors, and an integrated 5-year program is the 3 kind of flexible way in which you can go towards master education. Next one I would like to bring is integrating professional education. Regarding the integration of professional education with general education, the policy aims to take a holistic view to the preparation of professionals by ensuring broad-based competencies, an understanding of the social human context, a strong ethical compass, and addition to the highest quality professional capacities. There is something holistic about the recommendation that we have made. I'm sure most of the professionals are very aware of this particular part of it, especially the IIT faculty and the academics. And but we have made a strong pitch for this because we think many of the higher education institutions, especially the university system, certainly need to address this much more seriously than what has been done so far. All institutions offering either professional or general education must be organically evolved into a multidisciplinary institution offering both by 2030.
The overall higher education sector will aim to be an integrated higher education system, including professional and vocational education. Thus, this approach will be applicable to all higher education institutions across the current streams, which will eventually merge into one coherent ecosystem of higher education. This is ultimately the objective by 2030, 2035. There is certainly a time frame. It's not easy to make this kind of transformation, but we think that we need an integrated professional education as a part of an overall higher education. Now we come to the quality higher academic research in the fields. Again, I don't have to carry coal to Newcastle by giving you why we should do research, but put some numbers here just to see that the situation in our country with respect to research. Whereas IITs and those Kaisers and things like that, you have tremendous research and vibrant activity going along with teaching. The broader question of the university systems, both state and the central, I think we need to do quite a lot. Even though we do address this question of a quality academic research in the overall context of higher education institution, we would like to particularly make this policy focused on educational systems in the university, and many of the state universities and other private and some of the other private universities certainly has to review this in the context of the type of recommendation we made. And we do know the importance of the European Union estimate that 2/3 of the economic growth of Europe during they came the research. You had also, if you really look at the European accomplishments in the research and innovation, I was just trying to look at some of the details. 15% of all productivity gains in 2000 to 13, and that an annual increase of 0.2% of GDP in R&D investment result in an annual increase of 1.1% in GDP, a five-fold return for the type of outcome that they were getting. If you look at the present research and innovation investment in our case, 0.7, 0.8, we can keep debating on that. One has to compare it with respect to something like 2.8 in US or for 4.3 in Israel or South Korea. These are the kind of just 3 times the proportion of GDP. And this lower level of investment certainly meant the number of researchers in India per lakh of population is just 15. Numbers are 400, 800 kind of numbers. If you talk of US and as an example, other it has an impact. I don't have to again emphasize low levels of patent application and scientific publication. So these are the kind of things, and certainly it was a very important agenda in the NOR discussion with regard to propagating research in the higher educational institutions. And so we have spent a considerable space and time to make sure that we have some very tangible recommendations on promoting this. Now, how have we tried to recommend it? We have tried to recommend the creation of a national research foundation. It is it is based on the fact that the policy will put emphasis on catalyzing and energizing research and innovation across the country in all academic disciplines, with particular focus on the state universities and colleges. I said that in the beginning, and that is where really the lacuna does exist, and they are serious that too. A fund to seed research in all universities and colleges so that synergies between the research and quality education can be leveraged maximally. NRF will fund across all disciplines, it's not only in engineering, and also it will expand the research and innovation at all universities and colleges, including private institutions. We have not made a distinction between private institutions and public funded institutions. And the criterion will be, of course, the merit of the proposal and the kind of capability to do research and the type of outcomes. And we need to make sure that they get the benefit of a funding system where this can be pushed further. After all, they also educate Indians, and many of the people depend on the private institutions for education. The NRF will have the provision to cover many themes: science, technology, social sciences, arts, humanities, and many more. In the scope, of course, everybody understands funding research through a competitive peer review process, building research capacity at academic institutions across the country through mentorship. There are very specific recommendations we have made regarding the mentorship, the type of bringing in
people who are veterans of research, who are at this time available for guiding research in these kind of institutions, who can spend some time doing research, guiding research, and also establishing the capability to conduct research in these kind of institutions, and then create the beneficial linkages between researchers, academy, everybody talks about this, and disseminating research through seminars, which is the other aspect of doing research. So these are the kind of things. This is just to give a little brief summary, a snapshot of the kind of thought that we are put into the National Research Foundation. We think this needs to be established, and this is also going to be. We had, of course, in our mind things like the National Research Foundation of USA. There are models of establishing this kind of a system, which really becomes a place where they address the excellence, the relevance, and the kind of outcomes with respect to research. And this has had a very strong influence on the support of research in the educational systems in many of the advanced countries, and particularly if you look at the models like US and Europe. And the other aspect that we have addressed is question of energized and educational capable faculty. We have spent devoted considerable space with regard to the questions of the faculty, the quality and engagement of its faculty. And virtually, we can say the faculty is put back at the heart of the higher education. The rampant practice of contractual appointment, one issue, very heavy teaching loads, these are all may not be applicable to institutions like IITs. But these are anyway, I don't have to emphasize these aspects of it with respect to the broader issue of higher education. The infrastructure support, most faculty do not even have a structural faculty recruitment and development plan. So we have gone into the details, areas like recruitment, development plan, career proposal, progression, compensation management. Every part of the institutional development plan should carry this in the higher education. Appropriately designed a permanent employment tenure track system for the thing by 2030. Autonomous faculty empowered to make curricular choices, conduct assessment of students, infrastructure for continuous professional development. These are other aspects of it. And appropriately designed bridge courses for mid-career professionals to get into teaching. That's also available so that if anybody wants to get into the teaching profession from another area where you need to facilitate this by the appropriate bridge courses that can be worked out. One of the important things that we have tried to do is to consider the school education and the teachers for the school education. One thing we found that the existing system, the school education, doesn't meet the type of standards and the type of things that we need to have as a background for teaching at the school level by the conventional educational system providing teacher education. What we have tried to do is to move the school education preparation will be done in the multidisciplinary universities. Departments of education will be set up in many universities to offer a 4-year integrated state-specific BEd. The whole idea is to bring in BEd as one more of those undergraduate educational stream, one of the undergraduate educational stream, put it at a par with the other professional educational themes as well as the mainstream education. So BEd will be an undergraduate program of study covering both disciplinary and pedagogic teacher preparation courses for each stage of education, foundational to secondary. All subjects, including arts, sports, vocational education, they will be mainstream. On par with other undergraduate degrees, gradually the 4-year program will be eligible for master's and PhD programs. And the current 2-year BEd program will continue till 2030, but that after 2030, only those institutions who are capable or who are qualified to provide a 4-year teacher education can offer the 2-year teacher education. So we want to make sure that the standard, the quality, and the excellence that is intrinsic to defining the teacher education and preparation certainly it takes into account through the higher education systems overseeing the teacher preparation and education. 2-year program will be used for lateral entry of school teachers. There are also many interests in the people becoming school teachers in the lateral mode. Specifically designed courses in the pedagogy for mid-career professionals to become faculty will also be introduced. And I don't have to say substandard and dysfunctional teacher educational, thousands of them have been already shut down. And this is recommended to be reviewed. Either they move towards institutions like the degree giving autonomous colleges
or they close down or move over to other areas where the teacher education is not the main focus for these institutions. Something on the educational technology, Professor Ram Gopal mentioned about this with respect to the Prime Minister's this thing. We have addressed the questions of integrating technology at all levels of education. There is a very specific section where we have discussed this. I don't think I need to go much into the details of this. Again, the questions of four broad categories, well known: improving teaching, learning, imitation, and supporting teacher preparation, continuous teacher professional development, enhancing educational access to disadvantaged groups, streamlining educational planning, administration, and management, and teacher training for trade. The edutech is critical. And towards this, I also bring in some example where improving teaching, learning, and evaluation as a part of the educational system's resilience during the recent crisis like the COVID-19, the online education, synchronous mode, live interactions, and asynchronous mode, blending high-quality pre-recorded content, rapid feedback with automated smart evaluation. So these are the kind of things on the improving the teaching and learning and education. Example regarding the supporting the teacher education and continuous teacher professional development, you have the recommender systems for content and certifications. Just another example in the COVID-19 scenario, the enhancing educational access to a disadvantaged group, connect the few specialized teachers to virtual classrooms of learners with specific needs, must address the digital divide. That is the biggest problem with respect to the implementation of some of the digital divide, and certainly this is to be seen. Now, streamlining education planning, administration, and management. We are also trying to set up as a part of this a national repository. There is a national repository of educational data to track progress in achieving educational goals. So this is just to give you a gist of the kind of thing that we have gone into details in the policy on the questions of educational introduction. But equally important is the fact we have tried to create a kind of a setup. It is not creating a lab, or it's not creating a facility, but it's a kind of a forum, a national educational technology forum, which we have recommended to be set up with the following rules to provide. The reason why we thought about this kind of a body in the context of choices, in the context of selection, in the context of a research in educational technology, in the context of adaptation of educational technology from other sources of technology. The reason why I thought is the moment you throw open an technology as a facilitator for certain type of function, whether it is related to education or many other areas, it could be even to deal with energy from the waste. The type of technology and the type of options that will be available are enormous. And most of the time, the ability to make choices is one of the biggest problems that we see. The questions of when ISRO did work related to a national, what you may call as a developmental program, where you wanted to bring educational information to remote areas. The choice was to make sure that we create educational material. But what were the materials? Those materials had to be researched whether it is appropriate for the tribal population which is going to receive the material. 2 to 3 years of research work was needed before you could decide what the educational material and the technique of reaching the local population who will receive those material, and they will get enriched themselves in the process. This is a major challenge. This is one of the kind of example that if you want to proliferate the technology, you need to have a means of studying it, understand, evaluate, and regulate it. That is the idea that National Educational Technology Forum that we have to set up to provide an independent evidence-based advice to state and governments on adoption of technology-based interventions, to build intellectual and institutional capacities in educational technology, to envision strategic thrust in areas of technology domain, and to promote education in them among educational institutions, and to articulate new directions of research and innovation, the use of technology for improving education. We would assume that these kind of things, also the actual activities on research and things, will be carried out by the Department of Education, which will come up in the higher educational institution, that is some of the higher educational institution.
So the National Educational Technology Forum will maintain a regular inflow of authentic data from multiple sources, including the educational technology innovators and practitioners, particularly at the grassroots level. Disruptive technology, I don't know, this is something you're very much day to day, you're seized with. The 1986-1992 policy could not expect the internet's disruption. This policy fully expects the educational system to face many technological disruptions, artificial intelligence, machine learning, and so on. Two major aspects related to such disruptive technology we have identified: harnessing technology to improve educational outcome, that is human plus artificial intelligence, hybrid interactive systems, education in new and disruptive technologies, identifying them and preparing students in new large numbers. And finally, the project addresses both these kind of a thing, the policy. Now, on the governance side, I've just tried to, again, we got the policy in the beginning of my talk. I'm just coming back to the policy side and what is the kind of a governance structure that has been done. I am trying to here show the state education and the central education in two color codings. The blue is the color code for higher education and the yellow is the color code for this. And the main thing is the central agency for the education, the CABE, which is currently there, a council of the educational the thing. This particular CABE, the Central Advisory Board of Education, is now in this policy, they have elevated to the level that they will oversee the overall administration, governance, and evaluation of how the policy is going to work at from the central level, and also to make fine-tuning or midterm corrections if needed, and virtually becomes a kind of a kind of a reviewer and evaluator, and also a recommender with respect to the changes needed in the context of the higher education. So this is the system which is adopting the Central Advisory Board and making it more empowered. Then we have an Higher Educational Commission of India, which is what is recommended to be set it up as the highest body on the higher educational commissions. As a part of the governance, you have the four major verticals that are there under the HECI. One is academic and standard setting, which can be the PS, the professional standard setting bodies, and so on. That G is the General Education Council, the National Council of Technical Education, the All India Council of Technical, the medical. Ultimately, they will all come under the PS, the professional standard setting bodies, under the academic and standard setting. And on the academic side, you have, of course, the National Higher Energy Qualification Framework for higher education. And then you have the second one, which is regulation, the National Higher Educational Regulatory Body. And then you have accreditation, National Accreditation, this is the council. Then you have the funding, Higher Educational Grants Council. So these are the four verticals under a Higher Educational Commission of India. This is what is recommended. And of course, the education provision will continue to be given by the autonomous institutions and other types of institutions which are a part of higher education or school education. So this is the kind of a structure, broad structure, that we have tried to evolve with respect to the governance of the educational system, and with this clear delineation of the higher education part of it. Important about this is the fact that empowered governance and autonomy of higher education. This is something which I don't think that this need to be much discussed when a place like IIT or IAC, but it's good to know that this is one of the things that had can't be enough concern while they were debating on the subject with several of the experts in this area. The recognizes the effective governance and leadership is the key to creation of a culture of excellence in the innovation of higher educational institutions. All the higher educational institutions in the next 15 years will become autonomous, self-governing entities through a system of graded accreditation or graded autonomy. With appropriate graded accreditation, such institutions shall establish a board of governors consisting of highly qualified and competent individuals with proven capabilities and a strong sense of commitment, something which we need to do for many of the higher education institutions in this country.
The Board of Governors will be empowered to govern the institution free of any external interference, something everybody talks about it. This is something very explicitly made clear in the policy. Make all appointments, including that of the head of the institution, and take all decisions regarding the governors. The Board of Governors will be responsible and accountable to the stakeholders through transparent self-disclosures of the relevant thing. The Board of Governors to develop a strategic institutional development. These are all there in many of the institutions, long-term, medium-term, 5 years, or short-term, 1 to 3 years, based on the institution can develop educational and research outcome, parameters for quality and capacity, improve organizational and financial and human resource development plan to assess the progress. So this is just to give you a flavor of what we have recommended in the empowered governance and autonomy of the higher education. So the most important aspect is the fact that we have strongly recommended the autonomy on the governance, on the academics, as also on the finances. Now, what is the kind of way forward before I conclude the thing? There are several things I did mention in the beginning of my talk that there has been one of the most important steps that was taken immediately after the government took decision on accepting this recommendation with necessary inputs from public domain and other sources is the fact that once they did that, there were a number of presentations, there were a number of discussions, there were a number of seminars and other kinds of interactive systems. And both Honorable Prime Minister and Honorable President were involved in many of these. I don't have to say that here. Many of you were there as a part of that particular thing. So there is quite a lot that has happened in terms of sensitizing the policy in its role, but certainly there are many things which continue to be inquired about, seek clarification about, and not every some of them will come forward only when you try to do these things. You start getting a feel of the issues, and that is where I said about the midterm correction or fine tuning or better clarification or change of strategy. This will be a part and parcel of this, but by and large, I find that this is understood by many of the policymakers and implementation the related responsible people. The MOE itself has done an action plan. Now they have done it. I understand. They have, because I'm telling this this part of it more from the input that I received rather than trying to be a part of it. But I want to say that the MOE has certainly provided a good action plan which they have worked it out, which has got something like 100 and they have taken the higher education policy section. They have looked at the various policies items. They have converted them into identified action plans, and 181 activities have been identified with the time frame that it needs to do this under 16 broad themes. This is what they have tried to do. We need to do this. There's a continuous churning of these ideas, and some discussions are going on this. The UGC on its own has been also organizing conclaves for discussions on this particular thing. And then there have been a lot of the outreach of the policy to different segments of the governance systems of the country, both the central and the state, has been another major feature of the recent efforts in trying to make sure that the policy is read, understood, and then come out with suitable strategies of implementation which are applicable, because there are the local issues also. One has to keep it in mind. There is a broad strategy that we need to have for the country, for the policy to be translated into the next step of implementation, and also specifics with respect to the local conditions or the regional conditions and things of that kind, which is more than just the policy. It has got finances, it has got the resources, human resource, and many other things. So this is something on which work will be done. But the fact I would like to emphasize is, and you know this again because you are a part of a system which is implementing it, that this work is in the forward, in the movement. And I cannot but conclude with the statement that, as I said in the beginning, I think this is a very unique policy. It has its own challenges to implement. But I think what is important and what is reassuring for some of us is the fact that
many elements of this has been done in some form or other by institutions. And I mentioned about the IIT Delhi because of its pioneering role in areas like multidisciplinarity and approach of science, technology, and policy, society, or more recently, with respect to humanity and social sciences to be integrated into the undergraduate education. So these are things on which it is not that these are all totally new because of the policy, but there is much more that has been done through the various actions and directions and visions of various leaders and institutions of this country. I'm sure that we need to understand it very clearly. We need to see how that can be adopted and how this policy itself can aid in taking it forward. So, with these few words, I would like to thank again the Institute, the director, deputy director, and others for this privilege of talking to you and sharing my thoughts with you. Thank you very much. My name is K. Ramachandran. Currently, I work as Senior Advisor, Unit for International Cooperation, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi. The topic I have today is importance of policy in education and the fundamental principles guiding the National Education Policy 2020. Let me take the first part. What is the importance of a policy in the field of education? A policy normally gives a direction for education development in the country, say, for the next 10 years, next 20 years, and so on. Policy sets a vision. For instance, the National Policy on Education 2020 envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India into an equitable, vibrant knowledge society by providing quality education to all, thereby making India a knowledge superpower. That is the overall vision. So a policy provides a vision based on which we can formulate programmatic interventions to fulfill the vision, at the same time also to meet the education sector development programs in the country. The National Education Policy 2020 has certain fundamental principles guiding it. Number one, for instance, the policy seeks to recognize, identify, and foster the unique capabilities of each student so that we can nurture and foster her or his holistic development. The term holistic development is very important. I'll come back to that later. The second term, which is very important for all of us, is the term flexibility.
The NEP 2020 envisages flexibility in paths of learning, in choice of programs and courses, so that the education can be tuned to the interest and talent of each student. So this is the second principle guiding the policy. The third principle is what you call honoring student diversity. India is a country of tremendous diversity in terms of socio-economic status, in terms of culture, in terms of language, and so on. And therefore, the kind of students we get also would be of tremendous diversity. Many of them could be at the undergraduate, postgraduate level, first generation learners. How do we honor this diversity? Let me get back to the term holistic development. What do we mean by this term, holistic education? It simply means an education program that would help develop all capacities of human beings. For example, intellectual development or intellectual capacities, physical capacities, social development, emotional development, aesthetic development, ethical practices, and moral development, all in an integrative form. To have this integrated approach, therefore, will require exposure of students to or building capacities across variety of disciplines like arts, humanities, social sciences, natural sciences, vocational education, performing and visual arts, and so on. That would be what you call a multidisciplinary education approach. So to promote holistic development in the higher education sector, two quick actions. Number one, moving higher education institutions into large multidisciplinary institutions. And the word large is also important. In India, we have a large number of standalone institutions with the enrollment, in many cases, less than 1,000 and even less than 500. How do we move these single stream higher education institutions to a multidisciplinary institution? That becomes a transformative initiative, number one, for us. Second, can we offer in our universities and colleges multidisciplinary programs? That means a person may major in physics, maybe the person may offer a minor or opt for a minor in music or a visual art or history or economics. That means there is no clear-cut demarcation between arts, sciences, vocational field, and so on. That means the boundary between different areas of knowledge can be removed and get an integrated holistic education. Students are given options to choose courses or programs of study according to their interests and talents. And that is possible only we offer what we call multidisciplinary education. Gradually, all undergraduate programs in the country will move towards a multidisciplinary education approach, including
those related to professional education, vocational education, and so on. So therefore, many of these professional, technical, and vocational education programs also will have this approach, what we call a multidisciplinary approach to education. So this is a transformative initiative we envisage through the implementation of the National Education Policy 2020. Third, the National Education Policy 2020 envisages what we call institutional restructuring and consolidation. What do we mean by this? All higher education institutions in the country would be categorized into 3 groups. Number 1, those which are referred to research intensive university. They will offer high quality research programs in addition to high quality teaching. That means the focus will be on both high quality research and teaching. This will be one set of higher education institutions. Second, teaching intensive universities. They will focus more on high quality teaching, but at the same time, they will also do significant research. This is a second category. The third category belongs to what is referred to as autonomous colleges or constituent colleges, which can award undergraduate degrees, but they will also, if they accept 4-year undergraduate program, will also have research projects done by the students. These are the 3 categories of institutions we propose to have during the next 10 years. Research intensive universities, teaching intensive universities, autonomous colleges, or constituent colleges, which will award undergraduate degrees. Gradually through this, the affiliating system followed by the current universities will go away. It means many of them would become, the colleges affiliated now, would become what is referred to as autonomous colleges or constituent colleges, which would be an integral part of the university. So this is what we call institutional restructuring and consolidation. The fourth aspect, if you really want to improve the quality of education, make it multidisciplinary approach to education, we will need to attempt revamping of curriculum, including pedagogy and assessment program. Therefore, we will need to undertake curricular revision. Learning content should be revised. Pedagogical approaches should be made in tune with the revised curricular structure, and assessment that would help in moving towards, in terms of the multidisciplinary approach. This is what we call moving towards academic excellence. Now, academic excellence, as I indicated earlier, includes 3 things. Number 1, enhancing the relevance of learning contents. This is one aspect. The syllabi has to be revised, and the contents related to these must be improved. Second element of academic excellence is what is referred to as teaching excellence.
how can we ensure that the teaching learning process is improved to make it excellent in terms of imparting relevant knowledge, skills, attitudes, and values among all our students. Third element of academic excellence is, as I indicated earlier, improving the assessment methodologies and procedures. The policy talks about 3 approaches to assessment. Number 1, assessment of learning. That means assessment of learning outcomes, expected learning outcomes. Sometimes we call summative assessment. This is one aspect that helps students to move towards certification and so on, improve learning process, and see how we can move forward. The second element is what we call assessment for learning. Teachers assess learning to improve their own teaching methodologies, instructional strategies, pace, styles, and so on. This is essentially what is referred to as formative assessment. In fact, the emphasis now will be more and more on formative assessment. The next element is what we call assessment as learning. After assessment, students have what we call self-assessment strategy. Can they make self-corrections? Can they do self-monitoring of expected learning outcomes and make corrections required to enhance learning? That means the students themselves will use assessment to improve learning processes. That is assessment as learning. All these are part of what we call academic excellence. The next element of policy is faculty as the main part of learning process. Faculty at the heart of learning process. It means faculty excellence is something we aim at. This would need high quality induction programs for university and college faculty, high quality refresher program for the existing 1.5 million faculty in universities and colleges, for their continuous professional learning and development. And through that, we can bring about faculty excellence for 3 core functions. Number 1, what we call teaching excellence, scholarship, and so on. Including next one, excellence in research, teaching, and scholarship. So one important aspect of policy, therefore, is can we enhance the quality of research being done by Indian universities through the creation of the National Research Foundation, which will fund peer-reviewed research proposals and programs proposed to be undertaken by universities, mainly universities and faculty of universities and students. So therefore, the next transformative universities, initiative relates to enhancing quality of research or catalyzing quality
research and innovations. This is again a transformative initiative. The next transformative initiative we are talking about is, again, in the context of academic excellence, is utilizing technology. That means leveraging technological and digital technologies in education for 3-4 purposes. Number one, enhancing access to quality education. Number one is this. Second, improving the quality of teaching and learning process in universities and colleges and other higher education institutions. Third, can we leverage technology for continuous professional learning and development of our faculty in universities and colleges? Fourth, can we use technology to improve educational planning and administration at all levels of education, including higher education management system? Next transformative initiative in this context is changing the regulatory system of higher education. We now have a single body regulating the higher education system. Can we ensure that the higher education system have a body for regulatory functions, a separate body, maybe named as Higher Education Regulatory Authority? Second, a body for standard setting in higher education, a separate body for standard setting, referred to as General Education Council. The third body, as we have now, for assessment and accreditation of higher education institutions. What is being done by NAC? Can NAC be a meta-accreditation body, which may have many more bodies to accredit, and NAC plays the role of a meta-accreditation coordination body? Last, a body for financing higher education. All together, all these four, that is regulatory body, standard setting body, accreditation body, financing body, under an umbrella organization called the Higher Education Commission of India. This is considered to be another transformative initiative. What the policy proposed is, while regulating higher education, we want a system that is simple but tight, that not too many indicators, take a few indicators to accredit a body, regulate a body, but enforce it tightly. So that's the kind of thing we are talking, that this system will help develop quality education institutions. And in this context, technology is an important aspect as well. The next element in the context is policy is based on what you call equity and inclusion in all higher education institutions and so on. So equity and inclusion, I consider inclusion as providing access to success, not just access to facilities, and ensuring retention. Can we ensure that all enrolled students in the country will have access to success
they would attain the expected learning outcomes in the case of all students. So equity and inclusion as cornerstone of the National Education Policy 2020. Next in the case is, can we ensure what we call the support system for all colleges and universities, a quality learning environment to ensure a conducive learning environment for, a support system for students, how we can do it. So an important emphasis of the policy is on what is referred to this as improving the quality of learning environment and support systems, including the healthcare systems for students and faculty. Can we attempt that? Last but not least, I talked about this. When we say continuous professional development of faculty, I normally mention 5-6 areas of action. Number one, that training is important, as we do through this program. But in addition to that, can we have faculty exposed to good lectures by experts in the field on variety of disciplinary areas and so on. Number two, can we have demonstration lessons, demonstration teaching for all faculty members, subject related, subject specific, and so on. Third, we may have virtual or in-person subject specific groups which can meet virtually or in person once a month to discuss issues related to subject areas and so on. Next, can we provide opportunities to faculty to have action research on pedagogy, curricular contents, learning assessment, and so on? Can we aim at that? Next, can we ensure opportunities for faculty to participate in state level, university level, national level seminars, conferences, and so on? That also contributes to faculty learning and development. And lastly, even international exposure to faculty, participating short-term programs abroad, customized to program on research and development, and can we do it? And that is one element. Since I have limited time, I'm not trying to say that the policy, when implemented totally, will help enhance student excellence, students capable of demonstrating the graduate attributes expected, the learning outcomes defined for all stages of education. Number one, this. Contribute to achieving academic excellence through improvement of learning contents, teaching, assessment practices. 3, achieving teaching excellence through the kind of programs we talked about. 4, achieving excellence in research and scholarship. 5, achieving staff excellence, non-academic staff in university. Can we achieve that? Next, can we give opportunities to international experience for our students and faculty? Faculty exchange program, student exchange program, and so on.
Next, very important, as policy indicates, achieving excellence or quality in university leadership, college leadership and management. You may ask me a question, what is the difference between leadership and management? A leader is one who sets a vision for your college or university, sets directions for actions during the next 10 years and so on, 15 years, 20 years. And through this, can we aim at reaching a gross enrollment ratio in higher education for the age group 18 to 23 years, 50% by 2030? That is a target. Can we reach that? So excellence in governance and leadership is extremely important thing. Management. A manager controls resources, deploys team to ensure that the proposed vision of a university is enhanced, achieved, and that becomes the role of a manager. To end my discussion, I would say, what is proposed is to implement these transformative initiatives during the next 10 years to ensure high quality higher education, to make India a global knowledge superpower during the next few years, to reach the overall vision of the National Education Policy 2020. And in this, faculty of colleges and universities have a pivotal role. And that is why policy says teachers and faculty at the heart of the learning process. So I end by saying, next few years, we invest more in faculty, more in continuous professional learning and development of faculty in each of our higher education institutions to move towards a multidisciplinary higher education institution, to implement a multidisciplinary program, to improve leadership at all levels, to enhance governance management, and these are all part and parcel of the NEP 2020. I stop at this stage. Thank you very much for your kind attention.